Hello students, this is the second series of the GP rating exit exam MEK part 2. So let's begin. Basically, engine is depend on the type of firing. It is classified as a IC engine, means internal combustion engine, or SI engine, just like a petrol engine, spark ignition engine. It is also known as the external combustion engine. IC engine is further classified as two-stroke engine and four-stroke engine. In two-stroke engine, there is one power stroke in one cycle. In this one cycle, there is one power stroke. In four-stroke engine, there is one power stroke in two cycles. If it is started from here, this is, if it is starting from here, this is one cycle and it is two cycles. So in two cycles there is one power stroke. So first of all, we want to know what is the cycle. So in this cycle we have shown the first stage is the suction, then second is the compression, third is the expansion. Expansion is also called as the power stroke, and fourth is the exhaust. So these are the this. Then why I have shown this the ignition. Ignition is a external thing. Ignition, it is by the fuel injector. At this time, fuel is injection. At this time, the fuel is injection. When the piston is compressing, the after compression, what happens? Pressure increase, temperature increase, and at that time, if you put fuel oil, so it is the combustion will takes, and it is a expansion will take. So expansion is also called as the power stroke. So in two stroke, one power stroke. Four stroke, one power stroke in two cycles. It is in one cycle. First of all, we will know how is the piston, liner, connecting rod, how they are connected. So I will show you general diagram, and after that I will explain you what is the difference between four-stroke engine and what is the difference between the two-stroke engine, and what are the questions coming for them in the exam.
This is the piston. This is piston and this is the crankshaft. Now how this piston is connected to the crankshaft? Usually it will be like that. This is the crank pin. So this crank pin, इसको कैसे होना चाहिए? So this crank pin is connected to the piston via, what is this? This is called connecting rod. So how this piston will reciprocate? It will reciprocate in a cylindrical thing, and this cylindrical thing is known as the cylinder liner. This piston is having 3 rings. Now on top of that, it is having cylinder head. This is the cylinder head. And it is getting air from the turbocharger. What is meant by turbocharger? Turbocharger क्या कर रहा है? Means it is sucking the air and it is increasing the pressure. It increase air pressure. So air pressure को क्या बोलते हैं? Charge air pressure. And this is the suction valve. और इधर के exhaust valve. और इसके ऊपर क्या होगा? This is exhaust valve spindle, suction valve spindle. So all the exhaust will go to the exhaust valve. So तुम्हारे एग्जाम में पूछते what is the topmost thing? तो topmost क्या रहता है तुम्हारा? exhaust valve. हाँ, अगर दूसरा ऑप्शन एग्जॉस्ट वाल्व नहीं दिया रहेगा तो दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? सिलेंडर हेड. सो इन पिस्टन रिंग, पिस्टन
there are 3 rings. See, the topmost part is exposed to the combustion, तो इसको क्या बोलते हैं? Combustion ring. Bottommost part is exposed to the oil, so it is also called oil ring or oil स्क्रैपर रिंग. और बीच में क्या क्या है? इट इज हेल्पिंग द इट इफ दिस means combustion is leaking from the first ring, then second ring will be protecting the combustion. Plus, if this oil scraper ring gets damaged, the second ring protect the oil ingress. So second ring is the double protection. Basically, now actual what is happening in onboard ship. टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में व्हाट इज एक्चुअल ऑन बोर्ड. 2 स्ट्रोक में क्या है? देयर इज वन नो no suction spindle. It is having exhaust valve. Yes, how it is suction is taking? It is through the loop scavenging. लूप स्कैवेंजिंग मतलब तुम्हारा बाहर से टर्बोचार्जर से एयर आके थ्रू लाइनर के अंदर क्या रहते हैं? पोर्ट्स. वो पोर्ट्स मीन्स होल. इस होल से एयर अंदर आती है. इन 4 स्ट्रोक देयर इज सिलेंडर हेड. उस सिलेंडर हेड के अंदर सक्शन वाल्व और क्या है? एग्जॉस्ट वाल्व. तो इसमें 2 सक्शन स्पिंडल रहते हैं. टू एग्जॉस्ट स्पिंडल. और ये एग्जॉस्ट और सक्शन वाल्व कैसे ये ऑपरेट करते हैं तुमको मैं बताता हूँ. ये सिलेंडर हेड है. ये 2 सक्शन वाल्व है और ये 2 एग्जॉस्ट वाले. तो ये दोनों को एक साथ ऑपरेट करते हैं. तो इसको कौन ऑपरेट करता है? और ये 2 सक्शन वाल को कौन ऑपरेट करता है? रॉकर आर्म. रॉकर आर्म मतलब कैसा है? तुमने
गार्डन में सीसॉ देखा है? एक बार तू ऊपर मैं नीचे, ऐसा। तो ये रॉकर आर्म को भी ना एक इस पे ये रहता है, एंड ये रॉकर आर्म ऑपरेट्स द एग्जॉस्ट स्पिंडल एंड सक्शन स्पिंडल। ओके, अब नाउ आई रिमेंबर वन थिंग, सो विल गो बैक एंड एक अच्छा ये कर लेते हैं। हाँ, अभी इसमें हम लोग ने इतना क्रैंकशाफ्ट ये कर दिया था, तो इसमें ना तुम्हारा इधर क्या रहता है, गियर है, एक एंड में क्या है, गियर। फिर ये गियर दूसरे गियर को, इसको आइडल गियर बोलते हैं, आइडल गियर। और ये तीसरे गियर पे ये रहता है, और इसको बोलते हैं कैमशाफ्ट गियर। ये गियर से कैमशाफ्ट ये करते हैं। तो कैमशाफ्ट के इधर क्या रहता है, कैम्स रहते हैं। हाउ दिस कैम्स लुक लाइक, ये क्या है, कैमशाफ्ट। जब है ना तो ये कैम ऐसा घूम के ऊपर इस पोजीशन पे आते हैं ना, तो इधर क्या रहता है, रोलर है। दिस रोलर इज अटैच टू द फ्यूल ऑयल पंप। तो तुम्हारा पंप कौन ऑपरेट करता है, तुम्हारा कैम शाफ्ट। ये तुम्हारा एग्जिट एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर ये फ्यूल पंप से क्या होता है, इधर से इट गोज टू द दिस इज योर फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल पंप के इधर ये पाइपलाइन रहती है, पाइपलाइन के एक एंड पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। ओके, okay, this is the basic for the 2-stroke and 4-stroke. Hope you got it. If you have any question, you can you know my mobile number, you can contact me anytime.